सही बात है। सफीका, आज तुम जब आई हो तो सबसे पहले तुमने कहा है कि आज मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। तो क्या चीज़ है जो तुम्हें ट्रिगर कर रही है और तुम जो है ना इनसिक्योर फील कर रही? आज सफीका 12 बजे सोकर उठी है एंड बाय द टाइम शी गॉट अप उसके बच्चे जा चुके थे. They left the village with their dad. So when I got up, घर खाली था. रात को भी I was out late. Now when I woke up in the morning, अब बच्चे भी चले गए हैं. I don't know. I should be spending more time with them. You know, am I a good mother? So उसके बाद फिर जब एक ख्याल आता है, फिर दूसरा ख्याल आता है. फिर मैंने पूरे हफ्ते का डेटा निकाला. back. Yeah, I went back on the data. मैंने क्या You got your diary. Yeah, I opened up my diary. So सफीका, इनसिक्योरिटी क्या है क्या? I think deep down, शायद we all need approval. To be a good mother. Yeah. Approval Performing from good. the world that you're a good mother, you're a good daughter, you're a good wife. I also felt that as a wife. I was like, wow, he got up, he got the kids dressed. ये तो मेरा काम था. मेरा काम उसने कर लिया. और इनसिक्योरिटी इज सिर्फ माओं के लिए या फिर बीवियों का नहीं होता, सबके लिए. इनसिक्योरिटी इज बेसिकली व्हेन यू थिंक दैट यू नॉट गुड इनफ. ठीक है. Insecurities can be financial. Yeah. Insecurities can be social. You can have physical insecurities. Professional insecurity. You know, sometimes आपकी trauma based होती है insecurities. How you were treated as a child. आपको अगर attention नहीं मिली है तो वो attention seeking insecurity. Social insecurity. You're accepted or not. I think from the time that you're born, what newborn बच्चा रोता क्यों है पूरा? उसको तो माँ की सिक्योरिटी चाहिए. कि कोई मुझे सुन रहा है, मैं रो रहा हूँ तो कोई मुझे देख रहा है. अच्छा, उसके पास जाओ, उसको गोद में उठा लो, चुप हो जाता है. That's a healthy. अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं. तुम लोग तो माँ की बात कर रहे हो, मेरे साथ क्या सीन है? पहले मुझे बताओ, मेरी कॉफी में चीनी क्यों नहीं डाला? Sugar free diet. Yes. Yeah. So the thing was कि you know when Ayana was born, I had a C-section. I could not get up. And Ayana मेरी गोद में चुप नहीं करती थी because she was a colic baby. वो किसके चुप करती थी? मेरी भाभी की गोद में जाकर. 3 दिन ऐसा हुआ. चौथे दिन मेरी भाभी से लड़ाई हो गई. आज तक मुझे याद कराती है वो. तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे बोला था? Yeah. I was insecure as a mom. But you know, Amber, it's a healthy insecurity also, क्योंकि अपने बच्चे को पालने के लिए फिर हम ना लेवल अप करते हैं ना. ये भी कर लूंगी, चलो एक रात नहीं सोई, दूसरी भी नहीं सोगी. अपने बच्चे को जिंदा भी तो रखना है. अगर वो इनसिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर तो बच्चे गए. वो चीज उस वक्त कम्युनिकेट भी हो गई. I communicated. She understood what was going on. You know, instead of negative thoughts पाल के अपना relationship खराब करती. I was just very straightforward with her. She understood what I meant, and she just started helping me in the way that I wanted help. Yeah. And insecurity is a root cause of overthinking also. जब आप सोचना शुरू कर दिया, यार जिससे अभी क्या तुमने सोचा कि यार मैं तो रात को भी नहीं थी, मैं तो सुबह भी देर से उठी. फिर आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हो, फिर आप एक ऐसे साइकिल में पड़ जाते हो. और फिर आप लोनली हो जाते हो. शायद मैं ही ऐसी माँ हूँ, यू नो, अकेली, कि मैंने तो ये बहुत मैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स में तो फिट ही नहीं हुई, क्योंकि अप्रूवल वहां से चाहिए ना. अच्छा, एक बात बताओ, हमारी तो इनसिक्योरिटी पे ना किताबें लिख रहे हैं, वॉल्यूम भी छपते हैं 2-4. अपनी इनसिक्योरिटी बताओ. यू नो, इनसिक्योरिटी ऐसा नहीं होता कि मेरी जिंदगी में एक दफा आए और मैं उसको एड्रेस करूंगी और वो खत्म हो जाएगी. रोज मैं उठती हूँ और मैं बहुत सारी इनसिक्योरिटीज के साथ उठती हूँ. ठीक है, क्योंकि वो शायद मुझे आगे बढ़ने के लिए एक फ्यूल पंप भी है. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे अब मैं अपने प्रोफेशनल उसकी बात करती हूँ इनसिक्योरिटी की. अब मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, अपनी क्लासेस नहीं करी 1 मंथ, तो मुझे होता है कि यार मैं अपने स्टूडेंट्स को वो 1 महीना, वो तो यहाँ पे हैं, वो कहीं जाके योगा तो कर सकते हैं ना. अब मैं उनको बताऊँ कोई ऐसी जगह जहाँ की वो कर सके, या फिर मैं उनको ना बताऊँ. मेरी इनसिक्योरिटी की कहीं उनको वो लोग अच्छे लगे तो वहाँ चले जाएंगे, मैं वापस आई हूँ मेरे और मेरे क्लाइंट्स ही नहीं होंगे. एंड देन मुझे होता है नहीं, शायद उनके लिए कुछ अच्छा सोचना वो मेरी इनसिक्योरिटी से बहुत बढ़कर है. और दूसरा, जब एक रिस्क का वादा किया गया आपसे, तो जो आपका है वो आपका है. वो फिर एज अ मुस्लिम आपका एक बिलीफ भी है. ठीक है. तो मेरे लिए टॉप उस पे ये था एज ए ह्यूमन. जब मैं सोचूं, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, एज ए ह्यूमन, तो शायद मैं उनका अच्छा सोच के ही ह्यूमैनिटी को आगे वो कर रही हूँ.
ठीक है. सो इट्स नॉट लाइक मैं सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ. सो एक इनसिक्योरिटी जो 2-3 या 4 दिन मेरे अंदर थी वो मैंने ऐसे एड्रेस की. सो ये मेरा जो कहते हैं ना फ्रेश इनसिक्योरिटी का जो है ना एक एक्सपीरियंस था. तो बाकी तो रोज उठवाता ना कि इनसिक्योरिटी होती है. Also, insecurities also change with time. या अब जो इनसिक्योरिटी हमें 15 साल की उम्र में थी, या then later on maybe the age of 25, that's all. It changes with time, right? When you're younger, maybe it's more about your physical insecurities, about how you look. फिजिकल इनसिक्योरिटी आई थिंक एट सम पॉइंट डिफरेंट टाइप्स की होती है ना. हमेशा आपको होती है. इनिशियली होता है हाउ यू लुकिंग, हाँ. आफ्टर किड्स इट्स लाइक Your body. बॉडी इज, यू कैन नॉट कनेक्ट you योर know बॉडी. that mother has 4 children but उसकी बॉडी बिल्कुल एक Deform हो गई है. मॉडल बॉडी है एक की, और आपकी डिफॉर्म हुई and है. आपकी डिफॉर्म हो गई है, आपकी बैंड बच चुकी है Yeah. बॉडी की, Yeah. you know, and you look at yourself in the mirror and you cannot recognize yourself because you had the image of yourself जो पूरी जिंदगी आपकी You बॉडी don't रही है. recognize what you see. और वो हमारी जनरेशन ज्यादा वो कर रही है क्योंकि पहले जमाने में इतना बॉडी शेमिंग और वो चीजें नहीं थी. लोग एक्सेप्ट करते थे और टाइम देते थे. सोशल नेटवर्क भी नहीं था Yeah. आतिया जहाँ पे लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं. लोग अपनी कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों के Yeah, साथ थे. बिल्कुल. जो सोशल सर्कल है वो वो influence चाहे आप करता है. बाहर जाएं या ना जाएं, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज Because इट्स इन it's all in front of you Yeah. every day. Yeah. you That's see people also the greatest trigger for insecurity आजकल के- these days. Yeah. But before we get to that, I wanted to address, you know what you started with when you said that your insecurities never really go away, Yeah. right? You learn to deal with them better. yeah जो एक insecurity है वो रहती है, आपको periodically trigger करती है. For example, in my own case, when I was 14 or 15, I had a skin condition. I lost a lot of my hair. I lost my eyebrows, my eyelashes, and it was horrible. You know, like that's that teen age where your looks really matter to you. And then I got over it eventually, and then again postpartum when I delivered my first one. From 49 kgs, I went up to 96 kgs, 1 ton literally, right? And after I delivered Sikandar, I thought magically, you deliver a baby, और आप पतले हो जाओ. and then and right after delivery, my weight was even worse than what it was when I was pregnant. So that same insecurity that I had when I was 15 got triggered again at the age of 27. I think at that point you just learn to deal with it better. Like when it hit me again at 27, I could deal with it better and I could tell myself this is going to pass. Yeah, it's a phase, right? It's a phase. But Sabika, and then वो इनसिक्योरिटी आपकी है या आपको सोसाइटी ने दी है या किसी बहुत आपके अपने प्यारे ने दी है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है. शायद वो उसने वो सोच से आपको नहीं कही होती बात, मगर उसकी वो बात आपको ऐसे लगती है और आपको वो इनसिक्योरिटी में बदल जाती है. फिर खुद को समझना कि क्या वो इनसिक्योरिटी आपकी अपनी है या किसी ने आपके अंदर वो इन्फ्यूज की हुई है. it's very important Yeah. to question yourself. Yeah. You know, कि if let's say I want to lose weight today, I will ask myself whether I want to do it for myself, Or are you ready? or whether I want to, am I ready, or whether I want to do it because people are telling me that I've put on weight. Yeah. You know, there's a difference, because when I want to do it for myself, I'll be very happy going through that process. But if I'm doing it for someone else, I'll be miserable. Yeah. And that will add on to my multiple different insecurities that I will have. And the stress level. So you're saying that when you feel insecure, the idea is to sit back and question कि क्या वो is it about something genuine? Yeah. Am I feeling insecure? Yeah. Right? क्या ये insecurity valid भी है? And then you can see if you want to do something about it. Yeah. Because sometimes you can do something Obviously. about it. Right? For example, do you remember that day when I had this interview, right? I Yeah. went for a job interview. And so one of my insecurities, I would say, is in the professional world when you come across so many people and you see some wonderful women who do so well. Yeah. They're so, like, the accomplishments are just brilliant, right? So before I even went for that interview, I'd researched on that woman who was supposed to interview me, and she was so well accomplished. And I think I went in not very prepared. I could have done more, right? And she asked me all of these questions, and I really, really bombed it. Uske baad I went home because it hit
something that I was already sensitive about. Yeah. Right? Or I thought in my head that, maybe I can know more. Yeah. I came back home, I felt miserable for about a few hours. Uske baad I told myself कि, you know what? Next on it. time, work on it. Move on. Move on, Yeah. work on it and learn something from it. So I know I'm not going to walk in unprepared again. That's the healthy insecurity, right? Security सिर्फ ये नहीं होता कि हमेशा आपके लिए बहुत टॉक्सिक होता है या बुरा होता है. You even pass on your insecurities. Yeah. I always had this issue with making friends as a kid. जब मैं स्कूल में थी, I was at times asked to sit separately. So insecurity is always there in me. कि what if my daughter cannot make friends? What if she is having a bad time? And I still remember, Ayana, के 4 years of Montessori, we used to cry together. Because वो तो छोटी बच्ची थी आज जिसने मुझे ये बोला, he doesn't want to be my friend. You know how children are, I don't want to be your friend today. And I was like, और मैं उसको हक करके रो रही होती थी, और मेरा हस्बैंड मुझे देख रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं एक 2 साल की बच्ची को गले लगा के रो रही हूँ क्योंकि वो रो रही है. He could not understand what I was You're going mourning through. your trauma. But I just thought that she is also going to go through the same miserable phase, And she'll be left out. and she will be left out. So I was actually passing my insecurity, and I realized कि वो actually, instead of playing by herself or being okay with it, she actually started thinking about, was I okay today? So maybe you planted, unconsciously planted that idea in her head. Yeah, that she needs to be okay. Yeah. People need to be friends with her. People need to be nice to her. She just could not register that there will be days where people are not nice to me, and It's okay. Yeah. I'm fine by myself. That You're enough. yeah, I'm enough for myself. And then eventually, when I realized after 2 years, I started telling her, if no one's playing, that's Fine. Yeah. You're enough for yourself. Baad is when she started actually making friends, because कोई नहीं आता था. So she's like, I don't care, I'm going to do something on my own. It's got people to become friends with her. But अपनी childhood insecurities को cover up करना ना, it's very difficult. I think on and off मुझे अपने आप को एक reminders देने पड़ते हैं. I think your mind plays with you, right? आपको आपके life की negativities positive चीजों से ज्यादा याद रहती है. और ये इनसिक्योरिटीज क्या क्या बुरा किया वो आपको याद रहता है, बट उसकी अच्छाइयां you really have to think about it like that. Remind yourself. Exactly. फिर ये इनसिक्योरिटीज जो है ना, फिर आपके जब ये बढ़ जाती है ना, फिर ये आपके फियर में बदल जाती है. फिर आपको कहीं पे भी जाते हुए ना, ये आपको डर लगता है कि यार मैं एक्सेप्ट ही नहीं होंगी, आई एम नॉट गुड इनफ. मैं शायद सोशली एक्सेप्ट मुझे लोग नहीं करेंगे क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ. मैं इस इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी, आई एम नॉट गुड इनफ. तो फिर आप हर जगह खुद को जज करना और ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो. फिर इसका कोई स्टॉप तो है नहीं ना. और ये बहुत जरूरी है कि जब आप खुद से कनेक्ट करते हो और आपको ये समझ आ जाती है ना कि आपकी वैल्यूज क्या हैं या आपके लिए क्या चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये इनसिक्योरिटीज कम होना शुरू हो जाती है. जो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो कम हो जाती है. ठीक है. और फिर जो इनका एक आप पे इम्पैक्ट होता है, वो ऐसा नहीं होता कि कभी खत्म हो जाएंगे. ये हमेशा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ आपकी जिंदगी का हिस्सा और ये होना भी जरूरी है. पार्ट ऑफ यू बीइंग ह्यूमन. बट हाँ, राइट. अगर इनसिक्योर ना हो तो फिर अपनी सेफ्टी, सेफ्टी, अपने आप को सेफ्टी, अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकता है. एवोल्यूशनरी हिसाब से तो इट्स ऑलवेज बीन देयर. So yeah, but ये कि then, but knowing yourself and knowing that what you want and what your values are और क्या चीज आपकी जिंदगी में important है, तो शायद उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो जाती है. And this is something I think we need to work on a personal level. Yeah. Nobody can help I you think you unless have and to work until on it consciously every day. Yeah, मतलब nobody can help you if you are not going to help yourself. You need to एक keep जो on इसका telling- फॉर्मूला है ना, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ, जो मैं इतने टाइम स्ट्रगल करते हुए हर चीज से लड़ते हुए जो मैंने वो किया, जब भी कोई सोच आती है ना, एक गहरी सांस लेके मैं जरूर सोचती हूँ कि क्या मैं ये चाहती हूँ या ये मैं लोगों की इन्फ्लुएंस में आके करना चाहती हूँ. बस मैं खुद से सिर्फ यही पूछती हूँ हर दफा. और फिर मैं हमेशा जो मैं चाहती हूँ मैं उस पे जाती हूँ, एंड जिंदगी इतनी आसान हो जाती है. देन आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ लोगों के लिए. और जब आप खुद सेटिस्फाई होते हो ना, तो फिर आपको किसी को सेटिस्फाई, जैसे सबिका ने बोला, जो आपके अंदर था वो आपको हिट किया ना सबिका, जब वो आपके अंदर नहीं होगा तो आपको हिट ही नहीं करेगा. कोई आपके बारे में जो भी बोलो, व्हेन यू आर सेटिस्फाई एंड यू नो तुम अपना बेस्ट दे रही हो ना, सो यू ओके विद इट. और अंबर जैसे अब कभी मेरी बेटी मुझे पलट के बोलती है यू नॉट अ गुड मदर, तो मैं उसके मुंह पे बोलती हूँ आई नो आई एम डूइंग माय बेस्ट एंड आई नो आई एम गुड इनफ. और हाँ, जिस दिन मैं गलत करती हूँ
और उस दिन वो हेल्दी इनसिक्योरिटी होती है और मुझे होता है कि मैंने गलत किया, ये मेरे से दूर हो जाएगी, जो मैंने गलत किया मैं उसको जाके उससे सॉरी भी करती हूँ। सो शी नोज कि ऐसा नहीं है कि मेरी माँ हमेशा सही है या शी इज डूइंग हर बेस्ट। ऐसे दिन होते हैं। My kids, I always tell them that look, what happened was happened at a bad time. Yeah. I took it out on you. I'm sorry. I shouldn't have. Yeah. But then that's how you can actually use your insecurity to your advantage. Yeah. Whatever it is, sometimes when you feel insecure about something, या अगर consistently आप एक चीज के बारे में insecure feel कर रहे हो, so maybe you should also think about it that what is this insecurity trying to tell me? बिल्कुल। Right? Do I need to better myself? Yeah. Physical insecurity, for example, I've put on a lot of weight, and I keep getting triggered with weight. Something that I want for a healthier me. Yeah. Maybe I should start going to the gym. ताकि वो बार-बार trigger ना हो. I did that. 4 years back when I wanted to lose weight after Ibrahim, I was like a big balloon. I could not recognize myself in the mirror, but I took my time. Ibrahim के 2 साल के Speak बाद kindly to yourself. You tell me to do that all the time. Yeah, but you need those little reminders. You always need those reminders. मुझे उस वक्त करना था, मैं 4 महीने गई, मैंने जिम किया, मैंने अपना हेल्दी ईटिंग किया. मुझे इस वक्त I don't think I'm ready. Yeah. I'm not ready to do that. I'm still not at the weight that I ideally want myself to be for myself. Honest खाए बगैर मर गई तो क्या होगा मेरा? Fair point. Yeah. Allowing yourself, right? Not pushing yourself. यार इस वक्त मुझे लग रहा है कि I think I'm going to be miserable. I'm not doing it because if I'm miserable, my entire household becomes miserable, right? It's your mental health affecting them also. Yeah. खुद को ये बताना कि इस वक्त तुम्हारी लाइफ में तुमने अपने बच्चे ज्यादा जरूरी है, उनके साथ तुम्हारा खुश रहना जरूरी है, ना कि खुद को जो ना डिप्रेस करके स्ट्रेस्ड करके जाके एक स्लिम ट्रिम होके आना. Yeah. So it's like knowing yourself, Yeah. connecting to yourself and understanding कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी वो नहीं है. Yeah. क्या हम इसको कंक्लूड करें? So I think firstly, we need to tell this that whenever we have insecurities, we're the only ones who can get rid of it. Yes. कोई हमारी insecurities आके हमारे लिए solve नहीं करेगा. Talking to your thoughts. You have to talk Answer to your yourself. answer your thoughts. You cannot If just there talk is any to a lesson in therapist. life at this age is no one's coming to save you. Exactly. You That's can't the go to a harshest and it's therapist. the truest lesson. People are going to at help this you, age. your friends. They're Because going to be there there- for you. So the end note is keep on talking to yourself even though लोगों को लगे कि पागल हो गई है, खुद से अकेले बड़बड़ कर रही है ना. Which is okay. Don't be afraid of you mumbling. really lose touch with life when you stop talking to yourself. Yeah. When you fail to take out that time at the end of the day or in the middle of the day. Yeah. That's true. Just talk to yourself, to go, in your mind as to what happened. Yeah. How did I respond to this? How did the person in front of me respond to what I said? Yeah. It's a very, very important dialogue, the one that you have with yourself. Yeah. That's true. I think हमारा end note औरतों वाली खुदाफिज के जितना लंबा हो गया है. Yeah. Okay. Bye. Bye.